Okay, guys, today we'll be talking about this concept of dimensionality reduction. Now, dimensionality reduction now per se is a concept, and there are a lot of algorithms which will actually implement this particular concept. So what we'll be doing is we will first understand what is the whole idea behind this dimensionality reduction. Dimensionality reduction exactly होता क्या है, हम पहले ये समझेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि how can we actually apply it in an algorithm like PCA. So PCA is an algorithm which will come in later, लेकिन उसके अंदर एक concept हम लोग use करने वाले हैं जिसका नाम है dimensionality reduction. So in the first half of our discussion, पहले ना अच्छे से आप dimensionality reduction आप समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद जाके फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसको क्यों यूज किया जाता है. ठीक है? Now observe this. ये क्या है? See. Now, what exactly is dimensionality reduction? See, whenever we carry out dimensionality reduction in any particular data or any data set that we have, हम लोग उसमें क्या करेंगे? उसमें we will have two different aspects. There's something called as feature selection, and then there is something called as feature extraction. PCA is the algorithm which is going to be using feature extraction method. So ये दो चीजें होती है dimensionality reduction में, feature selection and feature extraction. But then straight away, rather than jumping onto say an example या data set लेके अपन काम करें, उसके पहले we'll just play a little game. ठीक है? Now, guys, अभी ना आपके सामने कुछ images आएंगे और आपने 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है कि ये क्या है. यू कैन अनम्यूट योर सिस्टम्स, चैट बॉक्स में नहीं डालेंगे, यू कैन स्पीक. सो यू विल हैव एन इमेज. वो क्या इमेज है 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है. राइट? हियर्स द फर्स्ट वन. आईफिल टावर. आईफिल टावर. अदर्स? क्या था ये? आईफिल टावर. आईफिल टावर. ठीक है, चलो, ये फर्स्ट इमेज इज आईफिल टावर. नेक्स्ट. क्विक. Same Eiffel Tower. Same Eiffel Tower. Okay. So it's a tower like. ठीक है. Eiffel Tower still. It's a rough representation. It's still an Eiffel Tower. Now guys, understand this. You've got in two minds because मैंने पहले एक Eiffel Tower देखा and then I'm showing you some more images. तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कुछ तो होगा. But guys, just understand this please कि ये क्या है. See, when I gave you this first image, आप आराम से इसको Eiffel Tower करके आपने पहचान लिया. But understand, ये इसलिए आइडेंटिफाई करना इतना इजी या ऑब्वियस था because there was so much of detailing around it. So it was a colored image plus आप अगर बैकग्राउंड देख लो, आप ग्रास देख लो, स्काई देख लो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें. But the fact is, agreed that this image is looking pretty nice, but ये sky हो गया या ये जो grass यहाँ पर आपको दिख रही है या ये जो भी यहाँ पर आपको trees वगैरह दिख रहे हैं, they are actually not contributing in any given way for you to be able to identify this Eiffel Tower. अगर मैं इतना crop करके भी आपको ये image दिखाता ना, you would have still been able to identify an Eiffel Tower ना, है ना? Now, what I did is I removed all that extra details and showed you this image. You could still identify this Eiffel Tower. अब इसमें भी थोड़ा डिटेलिंग वगैरह ज्यादा थी तो आपको आराम से समझ में आ गया. इसमें भी मैं डिटेलिंग अगर थोड़ी कम करके भी आपको अगर ये दिखाऊंगा ना, you will still be able to identify the Eiffel Tower. Now guys, just understand this. अपना aim क्या था कि I needed to identify what is it that we have in this image. है ना? ये किस चीज का फोटो है ये अपने को पहचानना था, तो वो आईफिल टावर अपना आंसर है. बट द फैक्ट इज आईफिल टावर पहचानने के लिए आई डोंट नीड एन इमेज एज डिटेल्ड एज दिस. अभी इसके कंपैरिजन में अगर इसमें डेटा से 10x है, मैंने इसमें से 2x डेटा रखा, बाकी सब निकाल भी दिया, यू कैन स्टिल आइडेंटिफाई आईफिल टावर.
या मे बी इसमें से अगर ओरिजिनल इमेज 10x था, दिस इज जस्ट x डिटेलिंग के हिसाब से, दिस इज मे बी 1/10 of what the original data was, but I can still identify the Eiffel Tower. But understand, processing 10x data versus processing x amount of data, this is going to be much simpler and much faster. The question is, अगर Eiffel Tower identify करने का है, and if I can process X amount of data and still get my answer, why should I even think of using 10x? Getting it? Dimensionality reduction. डायमेंशनैलिटी रिडक्शन बोलता है कि कोई भी एक इमेज को या कोई भी एक डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर n पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको n के n यूज करना है. You can actually get that particular image identified, or you can actually get that data identified or processed even if you pick up only the relevant data and still get the job done. इसमें से क्या था, आईफल टावर पहचानने के लिए टावर इंपॉर्टेंट था, मैंने खाली वो टावर इधर रखा, बाकी सब निकाल दिया, है ना. सो यू नीड टू पिक अप रेलेवेंट डेटा. मैं खाली स्काई लेके इधर बता देता तो आप ऑब्वियसली उसमें से आईफल टावर नहीं पहचान पाते थे. सो ऑब्वियसली यू विल नीड टू पिक एंड चूज कि ये इमेज में से कौन सी चीज अपने काम की है. यू जस्ट पिक अप दैट, उसको प्रोसेस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. Is this fine? So dimensionality reduction is about identifying those parameters which are actually playing a role in identifying or maybe processing some particular data, and any other data where any other data which doesn't play a role in solving that particular problem, usko consider karne ki zarurat hi nahi hai. You can just absolutely eliminate it. See, if you eliminate all redundant processing, obviously your answers would be more accurate, obviously your processing would be much more faster. So this is what dimensionality reduction is trying to achieve. So this was just understanding the concept. Now let's try and get into the technicalities of this particular algorithm, or sorry, this particular concept. So yahan pe what have we just concluded? We have just concluded that we can actually identify the same object without using all the features. So we can just remove those additional features so that it becomes faster. The system can process the data faster, and it can also it makes the system faster, and it can also make the processing much more better over here. Okay. Now what we'll try and do is, now we had gone to an example. Now, again, I'm going to explain this with a very simple mathematical expression, and then obviously we will get into the intricacies that we'll see during programming. Observe this. Now, suppose I'm making certain calculations. So I'm required to do this, right? So I'm required to do this. Say, suppose I'm required to calculate this value of E, but for me to be able to calculate the value of E, I want to calculate all this, A, B, C, D. I want to calculate all this. Okay. Now, one thing is that, okay, I get the value of A, get the value of B, get the value of C, get the value of D, और फिर E calculate कर लो. ये हम कर सकते हैं. But suppose I don't want to do this donkey work. इसको simplify करने का या इसको fast करने का क्या तरीका हो सकता है? अब there are two things possible. One, सपोज ऐसा है कि ए और बी हम अलग अलग कैलकुलेट करके भी वी कैन गेट दिस आंसर. बट सपोज अपने पास एक वैल्यू है से x, somehow we can get this value x which can represent both a and b, या a और b का जो कॉम्बिनेशन है उसको x represent कर सकता है. Now, if at all I can do that, then rather than using A and B or calculating two separate values of A and B, I'll calculate this value of X and then get my job done. अब इसमें क्या हुआ? Rather than making 4 processings, A, B, C, and D, I'm required to make just 3, which is X, C, and D. Now, this is what is called as feature extraction. Feature extraction का मतलब होता है where you can have maybe a single value representing multiple values. In that case, rather than calculating each of those values separately, you can use that combined value or say x in our example, and then you can simplify this further. तो ये एक चीज हो गई, ये हो गया feature extraction. Now, suppose if I want to calculate the value of E, obviously X is making a contribution to it, C is making a contribution to it, D is making a contribution to it, right? But suppose when I look at these values X, C, and D,
there might be a particular value which doesn't make much of a difference to the final value of E. Yani, it can add additional detailing, but it is not going to make a difference to my final answer. तो फिर उसको कंसिडर करने का मतलब ही क्या है? तो सपोज अपने को समझा कि अरे ये जो वैल्यू सी है ना, इफ आई यूज इट इट्स फाइन, बट इवन इफ आई डोंट यूज इट आई कैन स्टिल गेट द वैल्यू ऑफ ई. इन सच अ केस हम लोग ये वैल्यू कंसिडर ही क्यों करने का? विल जस्ट टोटली एलिमिनेट इट. दिस इज कॉल्ड एज फीचर सिलेक्शन. So over here, if you see, rather than making 4 calculations for A, B, C, and D, I'll be required to make only 2, which is X and D. So maybe the amount of work to be done has gone to half. So processing becomes faster, processing becomes more efficient. So whenever you go for dimensionality reduction, you will have something called as feature extraction. Feature extraction matlab yahan par you will see if you can represent multiple values using a single value. And then you have feature selection. Feature selection ka matlab hota hai any such parameter which doesn't contribute majorly, any such parameter which is not contributing majorly to getting the final answer, it can be eliminated. So feature extraction and feature selection is what is used by the algorithm. Abhi next is, let's try and understand this in terms of data set. अब क्या होता है, अपने पास ना एक डेटा सेट आता है जिसमें सपोज 8-10 अलग 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 टाइप की वैल्यूज दी हुई है, मतलब 10 अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से हम डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं. But the fact, guys, is why should I look at say all 10 parameters? So उसमें से we can always use feature extraction and feature selection, और minimum जो data जरूरत जितनी है उतना use करके we can get the final answers. Observe this. Now suppose if I have a data set, I've got 2 values over here. There is this parameter called height, there is this parameter called weight, and based on the values of height and weight, I can come to a conclusion about the gender of the person. So अपने पास कुछ information है कि there is one person whose height is this much, whose weight is this much, the person is male. Second person है, उसका height is this much, weight is this much, ये female. ऐसा करते 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 अपने पास ऐसे बहुत सारे parameters होते हैं. ठीक है? Now what I can do is observe this. यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है. सो इफ आई नीड टू आइडेंटिफाई द जेंडर, तो मेरे को दोनों पैरामीटर हाइट और वेट यूज करना पड़ेगा. व्हाट आई कैन डू इज, ये जो भी डेटा मेरे पास है इसके लिए एक 2D प्लॉट बनाते हैं, एक ग्राफ बना लिया. तो ये ना हम लोगों ने एक ग्राफ बना लिया बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैड. तो इसमें अपने को देख रहा है कि वॉट एवर इज द डेटा दैट वी हैड फॉर मेल, वेट इज समथिंग दैट वी पुट ओवर हियर, राइट? And for female, whatever is the weight, say suppose we put it over here. ये ऐसा है. Now what I'm trying to do is, मेरे पास 2 parameters है, height and weight. I'm thinking कि अगर मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे को सिर्फ एक ही पैरामीटर देख के I should be able to predict the gender, तो मेरा काम आसान हो जाएगा. So I'm trying to use something called as feature selection. So over here देखते हैं कि कहीं हम एक पैरामीटर कम करके भी will we be in a position to identify the data or the gender. Observe this. Now what I do is, ये जितना भी डेटा है ना, I'll just plot them on this x-axis. इसको मैं नीचे लेके आता हूं. Now I'm plotting all these data on the x-axis. तो जब ये सारा डेटा हमने x-axis के ऊपर प्लॉट कर दिया तो कुछ ऐसे आ गया. Now, if you see wherever the weight is less, see यहाँ तक आपका सारा female खत्म हो गया, and then male is this over here. Yes, there might be a little overlapping, right? So there would be men with say less weight. There would be some women with slightly higher weight. Possible है. But over here, if you see, there's a clear indication that most females have lower weight and comparatively men have higher weight. So what we can do is, just using this parameter as a weight, we can go and predict the gender of a person. We don't actually need to look at the height. Yes, there would be certain values, but whenever you're using approximation, there would be some overlapping, or there would be some overlapping, or there would be some points where it might not be too accurate. So that is what it is.
ठीक है. So this is what, just looking at the weight, you can actually predict what is the gender of a person. So this is what we can implement. ठीक है. Now just listen carefully. थोड़ा सा complications बढ़ने जा रहे हैं. So clearly we can have some parameters over here that if the weight is till this point, then it is the gender is female. If the weight is above this particular value, then the gender is male. So we can do something like this. Now the issue now is, what if there are 3 parameters? अभी अपने पास 2 parameters थे, एक था height और weight. तो हमने क्या कर दिया, आराम से एक 2D ग्राफ बना दिया, और वो 2D ग्राफ बना के we've got this job done. But ऐसा नहीं होता ना. Practically there might be so many different parameters. Now suppose I have 3 parameters: height, weight and age, और उसकी मदद से you need to identify the gender. Height, weight and age, I need to identify the gender. तो अब ये चीज देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं. Now needless to say, now this is a 3D graph. अब पहले क्या होता था, when it was a 2D graph, you could easily just plot the data either on the x-axis or the y-axis, and then it would be done. But now when you have a 3-dimensional graph, or when you have a 3D graph, अब ये नहीं हो सकता ना कि अब कोई भी एक एक्सिस पे सब हाइट के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, या सब वेट के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, या सब एज के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, तो अपना काम हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता. So what do we do in these scenarios where I have more than 2 parameters to be considered? जब तक 2 parameters है, things are relatively straightforward. But what if there are more than 2 parameters? अब अपने केस में there are 3 parameters. तो हम लोग कैसे करेंगे? Observe this. वो क्या करेगा यहाँ पे ठीक है, there are 3 parameters now. What dimensionality reduction will try and do is, dimensionality reduction will try and use whatever are the minimum number of parameters needed and then come to a conclusion, right? वो ये नहीं बोलेगा कि एक ही यूज करो, 2 ही यूज करो या 3 ही यूज करो. सपोज ऐसा दिख रहा है कि विदाउट यूजिंग ऑल 3 अपना काम नहीं हो सकता है, then it will still use 3. ऐसा नहीं है. But the aim here is to try and minimize the number of parameters that we will be using. ठीक है. Now ये कैसे होगा? We'll understand this using this algorithm PCA, Principal Component Analysis. तो एक छोटा सा हम लोग एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं PCA के अंदर हम लोग डिमेंशनैलिटी रिडक्शन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं. So let's understand this algorithm PCA, Principal Component Analysis, और वो कैसे डिमेंशनैलिटी रिडक्शन यूज करता है. Observe this. किधर गया? See this. Now suppose if I have some data, you've given me 3 parameters, जैसे हमने अभी देखा था, height, weight and age, and then that particular those points when I plot, say suppose they get plotted like this. ठीक है. Now over here, projecting the points on one single axis is not going to work. तो क्या करेंगे? See this. Now if I say कि नहीं, फिर भी I will just project it to one of the axis, guys, then there will be a lot of loss of data. You might not be able to work also उस पे, right? तो वो हम नहीं कर सकते. ऐसे केस में what is the answer? Now what we do in such a scenario is, rather than using the existing axis, क्योंकि आप अगर ये देखेंगे ना, see there is too much of data. If I try and get everything on x axis, then there is too much of approximation. उसके बाद similarly if I get the data on y axis, again there will be too much of approximation, so it might not work. तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिनेरियो में, rather than say going to any of these axes, what we'll try and do is we will create a new axis z, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we will create this third axis, because यहाँ पे now when I project all these points to this third axis, now the amount of approximation that is going to happen is going to be lesser, right? अगर approximation कम हो रहा है तो आपका जो result है वो ज्यादा accurate होता है. So projecting on an axis is fine, but that does not necessarily mean कि आपका जो existing data है वो ही axis पे आप project करो. Now अगर आप से पूछो कि भाई ये z किधर से आया, तो ये जो नया एक्सेस हमने बनाया है z, this is representing x and y combined, the data on x and y combined.
And that is where the approximation has become lesser. So the accuracy would be much higher on Z as compared to what it would have been on X or Y. ये ऐसा है. Now, when I look at this axis, I will project all the points on the Z axis, and then I just look at this Z axis, और उसके ऊपर से I can try and make some conclusion. So minimal loss के साथ हम data को Z axis पर project कर सकते हैं, and then from there we will get this. The key is, the challenge is getting this axis right, and that is what we'll see how the algorithm does it as we go ahead. Is this fine? ठीक है. Now, what exactly is this PCA algorithm? PCA algorithm is basically used to filter noisy data sets. Noisy data set से अपने को मतलब है कि आपका ऐसा data set जिसमें you will have certain unnecessary data जिसके बिना काम चल सकता था, उन सबको filter करने के लिए you can use PCA. अब one important, very important application of PCA is image compression or compression in general. आपने देखा होगा कि generally when you click a picture, maybe using your phone, उसका size is much higher. But if you just convert it to JPEG, you will see that the size has become much smaller. But if you look at the image, आपको फर्क दिखता ही नहीं है उसमें. ऐसा नहीं है. The original image and this image, they are different. The detailing is lesser. But actually speaking, उसमें जो भी additional redundant data था, वो eliminate हो जाता है. You will not be, to a naked eye, you will not be able to see or feel any difference whatsoever in that particular in that particular image. ठीक है? So that is what is PCA. Now, before we go ahead and implement PCA, let's understand one more concept of covariance. Covariance क्या चीज होती है? See guys, just understand this. Whenever we are drawing any graph, say this is X and this is Y, and then see, whenever we put this point X comma Y, basically these parameters help us define that particular point or help us understand where exactly is that point on the graph. So whenever we are planning to do anything with any data, we need to understand where exactly is that particular point or what are the values that can represent that particular point. ये चीज अपने को अभी यहाँ पे समझना है. Now, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इश्यू होता है, एंड उसका सॉल्यूशन क्या है, ये देखना है. Also understand, when you have these multiple points and when you have this axis like this, when you are projecting this over here, you also need to understand the correlation between these points. So when you are projecting a point or whenever you are approximating any set of points, we not only need to represent what those points are, we need to also understand the correlation that exists between those points. Now, what are the issues and how do we solve them? और इन सब के बीच में covariance का क्या role है, ये अपने को समझना पड़ेगा. Almost the entire PCA algorithm will work on the concept of covariance. अब ये क्या होगा, देखिए. See, variance का definition क्या है? The total variance is the sum of variances of all the individual principal components. ठीक है? So it's nothing but the sum of variances. That's it. But the question is, how do you calculate the variance? ये variance बनाओगे कैसे? आप गिनोगे कैसे? अभी suppose मेरे पास ये 3 पॉइंट है. Now, when I want to calculate the variance, basically I'm just looking for maybe one odd value which can help me represent these 3 points together. ये तीनों को represent कर सके तो हम लोग ऐसा पॉइंट ढूंढें. Obviously, the simplest possible approach that we've always used is कि भाई मीन कैलकुलेट कर लो. हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं. मीन आपको मालूम है, मीन का मतलब होता है एवरेज. Now, what do you mean by mean? Guys, whenever you calculate the mean, basically you are calculating the distance of these points from a common reference. कैसे मालूम है? See this. ये कैसे करेंगे हम लोग? मीन कैसे कैलकुलेट होता है? यहाँ पे I've taken this common reference और ये 3 पॉइंट है सपोज मेरे पास. Now, if I want to represent these points, तो कैसे? आपका ये जो डिस्टेंस है ना, ये रेफरेंस से कैलकुलेट हुआ, से 1 आया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, ये 3 पॉइंट अपने हो गए, 1, 2 and 3. I'll calculate the mean and then I'll get this value 3. So this value 3 is representing
the 3 points collectively. आपके पास जो 3 पॉइंट थे ना 1, 2 and 6, उन तीनों का मीन निकला 3. So 3 would be the best point to represent this entire data. Guys, this is okay. But इसमें इशू क्या है मालूम है? ऐसा नहीं होता ना कि भाई ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है तो ही आपका एवरेज आया 3. अगर आपके पॉइंट होते 2, 3, 4 तो भी आपका एवरेज आता था 3. So mean के साथ क्या होता है? Mean can get you a value which is good enough to represent the entire data, but you will not understand the distribution. मतलब अब अगर आप देखेंगे 2, 3 और 4 कितने पास पास के पॉइंट्स हैं, लेकिन आप देखेंगे इसमें 1 है और 6 है, राइट? इतने दूर के पॉइंट है, बट दोनों भी सीक्वेंस का से 1, 2, 6 ले लो आप या 2, 3, 4 ले लो, दोनों में मीन 3 आ रहा है. सो मीन इज समथिंग व्हिच कैन गिव यू अ वैल्यू व्हिच कैन रिप्रेजेंट द डेटा, बट मीन इज नॉट समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली help you understand the distribution of the data. That is why mean is not the best way to represent multiple points practically. That is why we go to something called as variance. See, I should be able to comment on the distribution of the data also. So not only should you be able to give me a value which can represent the points, but they can also they can also help you understand the distribution of the data. Okay. Now observe this. How does this work? Now, if I'm calculating the variance, it is always calculated as the distance from the center. So if this is 0, and if these are the 2 points, if 0 is the center, what is the distance of this point and what is the distance of this point? Similarly, if I calculate this distance from this point, distance from this point, right? Now over here, if you look at these values, right? These values, ये values देख के अपने को सब पता चलता है कि distribution कैसा है. If the distance is 1, so we know कि they aren't too far. If the distance is 5, so we know that the points are pretty far, right? ये ऐसे होता है. Now see this. How do we calculate the variance? So for these 3 points, if this is 0, if this distance is 1, this distance is 1, we calculate it like this. So you get 2 by 3. Similarly, when I calculate the variance over here, 0, 5 and 5, so I get this. So just by looking at these values, you can say that how close the data is or how distributed the data is. वो clearly ना आपको variance में फर्क दिखाई देगा. So variance can help you understand the distribution as well. So mean हम use करना चाहते थे, but mean के साथ issue था, तो हमने क्या किया? Variance use किया. Now variance would have been good enough, but variance के साथ एक और issue आता है, which actually is making us use covariance. Now what do you mean by this problem? क्या problem क्या है variance के साथ? Observe this. Now suppose if I start calculating the variance for this 2D data, हम लोग क्या करते हैं? अगर 2D data है तो simple है. You get the entire data on the x-axis and then work, or you get the data on the y-axis and then work. So this is your a variance on the x-axis, which is called as x variance. This is your variance on the y-axis, which is called as the y variance. Basically, distribution क्या है, x पे क्या है और y पे क्या है, वो आपको पता चल जाएगा. But the issue over here is, if you see these points and if you see these points, जैसे mean में क्या हो रहा था, even if the data were distributed very differently, you were still getting the same mean, so it was not serving the purpose. Similarly, हम लोग जब variance calculate करते हैं, obviously it is way more better than mean, but यहाँ पर भी issue ये है कि आपके कुछ points हो सकते हैं जिनका variance आपका same आए, लेकिन उनका correlation बहुत अलग है. See, if you see, this is a descending value. अगर मैं इसको एक number line पे डाल दूंगा, this is descending values. अगर मैं इसको number line पे डाल दूंगा ना, so this is actually ascending values. तो देखा जाए तो progression आप देखोगे तो एकदम opposite है ये, लेकिन दोनों का variance अगर मैं calculate करूंगा ना तो same आएगा. कैसे? See this. Suppose from this point, this distance is 2 and this distance is 2, तो आपका variance ये आ गया. Even in this case, if this is the center, this distance is 2, this distance is 2, उसका फिर भी ये value. The point is, variance आ गया 8 by 3 दोनों का. तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि ये जो दोनों points है, दोनों का distribution same है.
वो अपने को समझ में आ गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आई एम स्टिल नॉट एबल टू कम अप विद अ कोरिलेशन, बिकॉज इसका कोरिलेशन और इसका कोरिलेशन एकदम ऑपोजिट है। तो ये चीज हम लोग कैसे करेंगे? प्लीज सी दिस, ये चीज हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए वी विल गो विथ व्हाट इज कॉल्ड एज द कोवेरियंस। अभी आप ये जो अपने एग्जांपल देखा, आप y वेरिएंस कैलकुलेट कर लो या x वेरिएंस कैलकुलेट कर लो, x वेरिएंस और y वेरिएंस दोनों सेम आ रहा है ये पॉइंट्स का, जबकि ये दोनों पॉइंट्स एकदम ऑपोजिट होते हैं इफ आई पुट देम से ऑन अ नंबर लाइन। सो टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी विल यूज कोवेरियंस। तो गाइस मीन था, मीन में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए वेरिएंस यूज किया, अब वेरिएंस में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए कोवेरियंस यूज करें। Now how is this going to work? Now look at those points in green and also then look at those points in red. तो आप देखना हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। Now what I'm going to do is I'm going to use these coordinates differently. तो कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए ना पॉइंट्स का प्रोडक्ट निकाला। So if this point was -2 and 1, so -2 multiplied by 1 is -2, 0 multiplied by 0, 2 into -1, ये कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली ये पॉइंट्स के भी हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। Now what I'll do is I'll calculate this covariance. So when I start calculating covariance, so this is -2. See यहां पर स्क्वायर नहीं कर सकते, नहीं तो वो माइनस निकल जाएगा। So this is 0 and -2, ये कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली जब इसके लिए अपन ने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई। Now guys understand this, दोनों में आपको कोवेरियंस 4/3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन ये आ रहा है -4/3 और ये आ रहा है 4/3। तो ये क्लियरली अपने को बताता है कि इसमें से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या था, अगर मैं यहां पर ये एक्सेस बना दूं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू घटती जा रही है, तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मैं ग्राफ पे बनाता हूं तो यहाँ पे जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपकी y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So covariance will not only help you understand the distribution, covariance will also help you understand the correlation between the points. Is this understood, please? Now what we'll be doing is we'll be implementing PCA on this iris data set. अब basically ये data set में क्या है? अब there are 4 features, length and width of sepals and petals, ये दो चीज, so length and width of sepals and length and width of petals, और based on these 4 combinations अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि what is the species, is it iris setosa, iris virginica और iris versicolor, right? So आपके पास 4 पैरामीटर्स है, 4 का कॉम्बिनेशन से you need to identify the different species. There are 50 samples available in that data set. Now we'll be writing the code and as always lot of things will happen automatically, but just giving you an idea कि PCA जो है वो कैसे dimensionality reduction use करें। Now please see this, ये कैसे होने वाला है। Let's try and keep it very simple, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। Now अभी सपोज अपने पास एक टेबल है जिसमें ये सारे पैरामीटर्स है, इसमें बहुत सारे वैल्यूज होते हैं ऐसे, and say there are 4-5 parameters that we have. So we have 5 parameters from x1 to x5. Now, based on this, if I want to represent this particular data, then अपने को ये करना पड़ेगा कि उसको प्लॉट करके कुछ कोरिलेशन बनाना है, कुछ कोवेरियंस बनाना है जिसके ऊपर हम काम कर सकें। Now, जैसे पहले 2 वैल्यूज थे तो हम एक 2D ग्राफ बनाते थे, 3 वैल्यू थे तो हमने 3D ग्राफ बनाया, अब अगर 5 वैल्यूज है तो हम ये 5D ग्राफ बनाए। अब सवाल ये उठता है कि अरे ये 5D ग्राफ में आपने जब पॉइंट्स प्लॉट कर दिया, सो हाउ डू यू डू फीचर सिलेक्शन, मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर सिलेक्शन करना है तो आपको कहीं ना कोई पॉइंट्स को कोई ना कोई एक्सिस पे ये पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। अब सवाल ये कि भाई वो एक्सिस आप बनाओगे कैसे? सी अगर वो 2 एक्सिस थी तो what you could have done is you could have plotted these points either on this axis or this axis, easy था। या अगर 3D भी था तो हम एक तीसरा जो कॉमन एक्सिस है उसको लेकर हम उसके ऊपर प्लॉट कर सकते थे, बट अब ये सब 5 डिमेंशनल, 6 डिमेंशनल, n डिमेंशनल हो सकता है, उसको आप कैसे प्लान करो?
इसके लिए what we'll do is, what the algorithm will do is कि वो आपके अगर 5 पॉइंट्स है ना, तो 5 by 5 का एक कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाता है. Codes में this will happen automatically. You'll have built-in functions doing all this for you. You will actually never be required to write codes for this. वो आपके लिए कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाएगा. I'm just showing you कि अब जो हम कोड लिखने जा रहे हैं ना, उसमें बैकग्राउंड में होने वाला क्या है, राइट? सो कोवेरियंस मैट्रिक्स हम बनाए. उसके बाद क्या करेंगे? फॉर दिस कोवेरियंस मैट्रिक्स ना, for all the values we will calculate what are called as the eigen values. So covariance matrix में से हम eigen values हम लोग calculate करेंगे. Again something that will happen automatically. From this eigen values that I get, we will sort them in say descending order. मतलब क्या होगा मालूम है? पहले वो set of parameters आएंगे which are playing the biggest role in identifying the data. Then the next bigger one, then the next bigger one. ऐसा करते 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 you'll get so many of them. Finally what we'll do is, इसमें से जो टॉप 2 पैरामीटर्स है जो सबसे ज्यादा अपने रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनका आइगन वैल्यू सबसे ज्यादा है, हम वो 2 पॉइंट्स लेके उनको अपनी नई एक्सिस बनाएंगे. सो अपने पास भले ही पहले ही से ही 5 एक्सिस रही हो, बट व्हाट वी विल डू इज वी विल कैलकुलेट द कोवेरियंस एंड वी विल सी कि कंबाइंड व्हिच आर द 2 बेस्ट एक्सिस फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑल दीज पॉइंट्स. सो ये जो नई जो एक्सिस आपको दिख रही हो ग्रीन और रेड कलर में, ये जो नई एक्सिस है, दिस इज द न्यू एक्सिस व्हिच कैन रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स इन अ बेस्ट मैनर पॉसिबल. तो हमने जो 5 एक्सिस पहले बनाई थी, क्योंकि 5 की 5 चली गई, अब ये उसमें से 2, अब इसको हम एक प्लेन बना देंगे. सो माय एंटायर कैलकुलेशंस आर गोइंग टू हैपन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन, और ये प्लेन को लेके अब हम काम करेंगे. नाउ मोमेंट आई गेट दिस प्लेन, बेस्ड ऑन दिस आई कैन कम टू व्हाटएवर द कंक्लूजंस दैट आई वांट. अब क्या होगा? ये जो प्लेन था, इसको व्हेन आई कन्वर्ट टू डेटा, सोचो आपका ये जो डेटा था वो अब इसमें कन्वर्ट हो गया, एंड माय एंटायर प्रोसेसिंग वुड बी बेस्ड ऑन दिस डेटा. ये जो 5 वैल्यूज थे x1 से लेके x5 तक, उन सबको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं ये 2 पॉइंट w1 एंड w2. सो व्हाट आई विल बी रिक्वायर्ड टू डू इज, फॉर वर्किंग विद एनी गिवन डेटा, हम लोग w1 और w2 यूज करके अपना कंक्लूजन निकाल लेंगे. दैट बी मच इजियर देन यूजिंग x1 to x5. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्किंग. Okay, so in the first part of this code, what we've done is we've imported all these libraries. This is the path where I've saved that file on my system. As always, read underscore suv, csv. We've read the data, and when you print it, you'll be able to see the data. You'll be able to see the data in the console. So that is what we've done. Now, what we are going to do next is we are going to standardize the data. See, क्या होता है, whenever I'm trying to represent say multiple values using a single value, ऐसा हो सकता है कि there is a very little variation in some data, and then there is very huge variation in some other data. So somewhere we need to optimize it, or somewhere we need to standardize the data before we can actually use it. And this we've done in previous algorithms as well, where we've used standard scalar. Now this is not that we are using it for the first time. We've used this in other algorithms as well. So what are the features that we are required to work with? So that is what we've got. Now, whatever attributes you've mentioned over here, sepal length, sepal width, petal length, and petal width, everything we've got in this list called X. LOC is something which is a function which is used in Python for extracting the data out of data frame. So whatever features, so what are the features? These are the 4 features that you've got over here. We've extracted the values of all those features in X, right? Now, whatever is your target column, that gets to Y. So basically, the 4 parameters based on which we are working, that has gone to X. The parameter which we are required to predict, that has gone to Y. Now, what we are doing is we are just using this fit function on scalar, standard scalar, for standardizing the data. So जो भी आपका variance बहुत ज़्यादा है, that is taken care of over here, right? Now, if you want, you can put it in the entire data frame where data is X and the columns are
features. If you want, you can actually display this as well. So abhi tak we've actually not implemented PCA. What we've done is we've just used the standard scalar method for optimizing the data. Observe this. So यहाँ पे object clear करके object create करके what we've done is we've got the data as two principal components, और जब हम display करेंगे तो please remember ये चारों भी जो points है उनको represent कर रहा है ये दो points. So हम लोग वो जो बोल रहे थे कि covariance matrix बनाना है and then you need to calculate eigen values and then you need to sort those eigen values and everything, create a plane. All that has happened in this one line. That's it. सब कुछ यहाँ पर हो गया. तो ये हो गए आपके parameters. Apart from this, आपका एक parameter है जो आपने predict करना है. Where is it? हाँ, this one. This is something. If you want, you can also display this कि उसमें target करके जो column है वो भी है. So if I display this, so this is the target, this is the column which you need to predict. तो पहले ये चार वैल्यूज लेके आप ये फिफ्थ कॉलम प्रेडिक्ट कर रहे थे, अब ये दो वैल्यूज लेके हम ये तीसरा प्रेडिक्ट करने वाले. दैट्स इट. Now what I'm going to do is कि ये डेटा और ये डेटा I'm going to combine and put them in a single data frame. So that is what is this code. See this? ये जो अलग अलग था, अगेन ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, but again just to help you all understand कि first part हमने ये बनाया, second part हमने ये बनाया, अब हमने क्या कर दिया, pd dot concat, concatenation. What is it? Principal df and df target, ये दोनों को हम concatenate करेंगे. Axis is equal to 1, मतलब कॉलम के ऊपर से वो कॉलम करके उसको ज्वाइन करेगा. And then what are we doing? We will print this one. This is fine. Okay. So now when I run this, see this. So now आपका ये जो data था, after using dimensionality reductions, it has come down to this. अब ये data को लेकर हम आगे चलेंगे, but dimensionality reduction यहाँ पे खत्म हो गया. Get me this much, please. So if you see here, we are creating this figure as always an object of this class figure. एक subplot बना दिया, फिर whatever are the labels that you wanted वो अपन ने यहाँ पर रख दिया. What are the data that we are going to display? So targets में से iris setosa, versicolor and virginica is what we are going to get, and RGB are the three colors. Now what we are going to do is we've written a simple for loop where we are going to look at target. We are going to pick up one of the colors randomly and then we will plot all these points. So principal component 1 and principal component 2, that is what we will display in the form of a scatter plot. So जो भी अपना अभी पूरा काम हुआ था उसको एक स्कैटर प्लॉट में हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं. सो इनिशियल ये सारा जो कोड है ना, ये खाली आपका ये जो ग्रिड दिख रहा है ना, ये बनाने के लिए. Actual printing is happening in these lines. So you've got principal component 1 over here, you've got principal component 2 over here. Now red color में you've got iris setosa, green color में you've got iris versicolor, and blue color में you've got iris virginica. Now this is the plane. Now थोड़ी देर पहले हम जो example देख रहे थे उसमें we had spoken about a plane which would have represented all the 5 values. So यहाँ पे this is the plane which is representing this entire data. Now over here, if I just plot all these red points on the x-axis, तो वो यहाँ नीचे आ जाएगा, maybe between -3 and -2. अगर मैं green points को plot करूँ तो -1 और say 1.5 के बीच में आएगा, and blue is in the last part. So एक ही axis पे आ गया. Just by looking at that particular value, we will be able to classify or we will be able to predict the data. So I don't need to actually look at all the parameters. Just one plane that we've created using PCA is good enough for us to get a 2 components PCA. तो जो 4 parameters थे उसको कम करके हमने 2 कर दिया और उसके ऊपर से ये classification automatically आ गया है. So this is how you can implement dimensionality reduction in PCA.